delivering the houses which they have committed to the consumers. RERA as a regulatory has coming up with lot of issues, which because it is a transition period. RERA itself has formed, and every day there is a new issue which is coming on their table. So they are coming with lot of notifications. Every second day there is a notification. So our request is that as a developer community, we welcome regulatory RERA because illegal construction is completely wiped off. Interest of the consumer is always there, and in timeline it will be covered in terms of delivery. So consumer who is buying home is assured whether it is RERA registered project, in time frame I'll get my hard earned money invested home. So in this case where RERA is also in transition, lot of notifications are coming every second day. So when every second day there is a notification which is coming, it is very hard for a real estate company to check these compliances of everyday notifications which are coming. So here where we need a professional advice, chartered accountants play a very important role for us to guide on this notification changes which are coming on everyday basis through RERA. So in this case, chartered accountants have been playing a key role. If you ask us in real estate, for accounts we have a different chartered accountant, for RERA we have a different chartered accountant, and for GST we have a different chartered accountant. Because now there is an expertise in chartered accountants which has come. If you ask me in few places, if there is a specialization of a chartered accountant in particular subject, तो उस सब्जेक्ट में अगर किसी डेवलपर को या कोई भी एंटरप्रेनर को इश्यू है, बोल रहा है ये इश्यू है तो आप इनको मिलिए, इनके पास इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे. सो दैट इज वेयर chartered accountants as a professional has played important role for developers also. In the same time, I would say this is an era of notifications. So ये era of notifications में every day a chartered accountant has to be updated, as well as we as a developer also has to be updated, so that the RERA compliances are done on time. So this is one thing about RERA. And secondly about GST. So GST, initially when GST also came, there were issues. ये प्रोडक्ट में अलग GST है, उसमें अलग प्रोडक्ट में GST है, किसी में है किसी में नहीं है. Now real estate as a product is the only product where I see there is a triple taxation. How? रियल एस्टेट फ्लैट है, शॉप है, लैंड है, कुछ भी है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर उसको गुड्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है. आप उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी भर रहे हैं, आप उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फी भी भर रहे हैं, आप उसके ऊपर GST भी भर रहे हैं, और लास्ट में आपको उसका क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है. सो ये कॉस्ट आखिर में बेयर कौन करता है? When there is no credit and there is triple taxation, end of the day consumer cost gets increased, it is passed on. So I would request here in the committee to address together with our association to the authorities that ये ट्रिपल टैक्सेशन का जो मेथड है इसको कुछ चेंज किया जाए या क्रेडिट मिला जाए, तो इससे एंड यूजर कस्टमर कंज्यूमर का प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा, एंड टुगेदर इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. सो टुडे whatever we are buying as a developer, we pay all GST. There is no input credit. We are paying, a consumer who is buying a flat is paying stamp duty, he is paying GST. So there is triple taxation on a single product altogether. Second, in COVID period, I think most of the loans, project loans, compliances, everything was given a relief period of 1 year or maybe 2 years here and there. But in this case where the most touchy subject for India is affordable housing, which our company does, ATIB was not given any extension. So that was also not a relief, where actually the affordable housing is being created in the outskirts of MMR. ये घर वो है जो 25-30 लाख 40 लाख के अंदर के घर है. So that was also not addressed. So I would say that together if we as an association together if we address this together,
to the authorities. It may be, better for industry in future. And besides that, I would say I am representing our association NAREDCO, Neral Karjat of Navi Mumbai. So I would invite all the chartered accountants, students to focus on those regions. If you today compare, I was just talking to Manish ji and he was surprised. I told him that, सर आप अंधेरी में रहते हैं, अंधेरी में क्या जनरली प्राइसिंग है कारपेट एरिया का? And I today told him that Palm Beach Road in Navi Mumbai is today fetching more price than the suburb of Mumbai. I am born brought up in Ghatkopar, but the prices which were more in city, island city, has been stalled or probably decreased, but the prices on the other side of the city has increased. Why? Every one of us has the answer. अपने जो एरिया में रहते हैं वो रोड बड़ी नहीं हो सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बन रहा है, ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, लाइफस्टाइल खराब हो रही है, जबकि वी से दैट वी स्टे इन द सिटी ऑफ मुंबई एंड इट इज गोइंग टू बी वर्सर बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल्स, traffic is going to increase. So on the other side of Navi Mumbai, when we say today Navi Mumbai is also to an extent got congested. Now the new epicenter which is in talks and everybody has heard is Panvel. Why Panvel? Today Panvel has an investment of state and central government of more than 1,50,000 crores. पनवेल क्यों ऊपर आएगा, पनवेल क्यों ऊपर आएगा, पनवेल क्यों आएगा आज की तारीख में? तो आज पनवेल का जो रीजन है, अगर मैं आपको बोलूं बॉम्बे की टर्म्स में, कारपेट टर्म्स में बात करता हूं, सो द लोएस्ट प्राइस इन पनवेल इन टर्म्स ऑफ कारपेट टर्म्स शुड बी अराउंड 9 to 10,000 and on the upper side it is 25,000 to 30,000 rupees in Panvel today. Infrastructure in place, wide roads, connectivity better, पानी की कोई तकलीफ नहीं है, हवा पानी अच्छा है, Panvel terminus is big. Again, if you see the metro connectivity is increasing, lot of projects have been announced. There is one central government project which is already being started. It is called Baroda JNPT highway, that is part of Delhi Mumbai corridor. So this land is acquired, work has already started. So this is going to connect from Baroda to JNPT. There is a single highway coming up. There is one more highway which is already the work has not started, but it is on papers. The revenue is doing the acquisition. It is called MMC corridor. It is Alibag Virar corridor. So there is proposed hyperloop from Taloja area to Hyderabad. Proposed. The work has not started. Lot of MIDC investments are coming. The biggest thing what you and me in Mumbai has been always hearing about the old Parsis like Tatas and Godrej. Today you won't believe the whole patch of Godrej in Vikhroli is converted to part by part residential, commercial, and now a hotel by Taj is also coming up. Godrej has shifted its complete shift of manufacturing and they have bought land of 400 acres and the manufacturing has already started in 150 acres in Khalapur Khapoli. यहाँ पर एक ऑफिस बेचते हैं 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए में और वहाँ पर 1 एकड़ जमीन आती है 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए में. So it is a paradigm shift for them to liquidate this land, make a better proposal, and manufacturing they are shifting at one-stop solution at Khalapur. And this is where the shift is happening. If you see Bombay-Pune Express Highway, 1999 when it started, if you know, it was dream project of Mr. Gadkari and Bal Thackeray Saab. It was invested by Maharashtra government and within 3 months you and me were speaking that इतना महंगा टोल कौन देगा पूना जाने के लिए, ओल्ड बॉम्बे पूना हाईवे से ही लोग जाएंगे. And you believe me, in 6 months Maharashtra government made a loss in that project of express highway. वही एक्सप्रेस हाईवे 6 महीने में IRB कंपनी आई थ्रू देयर ओन
resources, they bidded, they have taken lease of 30 years, which is now extended for another 30 years. And today you and me have traveled to Bombay Pune Express Highway. आज जो ट्रैफिक अपन देख रहे हैं, आज वो हाईवे भी छोटा पड़ रहा है. सो डेवलपमेंट वहीं पे आता है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है. प्राइजेस भी वहीं पे इंक्रीज होती है जहां पे प्राइजेस कम है. सो करजत है कि पनवेल है, ये सब के प्राइजेस बहुत ही कम थे. वहां पर प्राइजेस 2.5x, 3x, 3.5x हो गए. जहां पर बॉम्बे में आप और मैं ऑलरेडी अभी रह रहे हैं, वहां पे किधर प्राइस रिवर्स हुए हैं, किधर किधर रिवर्स हुए हैं. सो यू एंड मी वॉकिंग टू एनी सबब ऑफ प्रॉपर मुंबई, आप देखोगे कि आपके आजू बाजू में तो रीडेवलपमेंट ही चालू है. अगर रीडेवलपमेंट चालू है तो उस बिल्डिंग में और 10 फैमिलीज रहने को आएगी. 10 फैमिलीज रहने को आएगी मतलब 20 और गाड़ियां रहेगी. उस लेन की कैपेसिटी जहां पर वही कैपेसिटी है, कुछ इंक्रीज नहीं हुई है, 20 गाड़ी का ट्रैफिक इंक्रीज होगा. सो यू सी द कंजेशन एंड योर लाइफस्टाइल इन फ्यूचर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर किड्स. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ दिस. सो दिस इज वन रीजन. अगेन इफ यू सी ब्रांड्स, पहले पनवेल है, करजत है, तो न्यू बॉम्बे में कभी कोई ब्रांडेड बिल्डर नहीं आया. ब्रांडेड बिल्डर मतलब छोटे बड़े बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द मुंबई डेवलपर्स. द बिगीज वर नॉट देयर. द बिगीज ब्रांड्स नहीं थे. सो नाउ इफ यू सी रसायनी, इट्स बीन डेवलप्ड बाय मिस्टर निरंजन हीरानंदानी. ही हैज डिलीवर्ड मोर देन 1500 हाउसेस ओवर देयर. एशिया का सेकेंड बिगेस्ट डेटा सेंटर निरंजन हीरानंदानी जी ने वहां पे बनाया, जिसका नाम है योटा. इंडिया में ऐसे वो 20 बनाएंगे. योटा करके अगर आप गूगल करें, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट एशियाज डेटा सेंटर वेयर डेटा ऑफ बैंक्स, मल्टीनेशनल बैंक्स, कॉर्पोरेट्स इज बीन देयर. This is data center is next going. Data is the next big thing where everybody is munching around, whether it is professional CAs, real estate people or across anybody, because data is the big thing. वाधवा जी का प्रोजेक्ट है वहां पर. This all projects what I am talking is 150 acres plus, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने 25-50 एकड़ डेवलप कर दिया. गोदरेज हैज ऑलरेडी डेवलप्ड एट पनवेल, has given possession and probably is giving possession. The latest which you will, it is already in the public domain, but you will hear very soon is Adani, because Adani is doing the airport, so they have taken up another 400 acres which is getting developed in Panvel. So अगर आप सब ये देखें तो उस तरफ का जो डेवलपमेंट है, पोस्ट MTHN जो ब्रिज बन रहा है, which will complete in December 2023 as per Srinivas ji, MMRDA commissioner, at a faster pace. This will shift the paradigm shift in terms of traveling to the other side of the city. तो उस तरफ काफी डेवलपमेंट आएगा. whether it can be first home, it can be second home, it can be warehousing, because connectivity is the key, infrastructure is the key. करजत नेरल की कनेक्टिविटी ऐसी है कि पनवेल करजत की कनेक्टिविटी ऐसी है, आज की तारीख में एक सिंगल ट्रैक है और वहां पर मेल ट्रेन रन करती है. वेयर करजत प्राइजेस आर 6,000-7,000 rupees carpet. I'm talking in carpet terms, क्योंकि built up and loading is another language which people don't understand. तो करजत और नेरल के लिए ऑलरेडी 2 साल पहले बजट में रेलवे से, सेंट्रल रेलवे से 4,000 crore had been allotted. The work of the railway has started and within 1 year करजत में कनेक्टिविटी पनवेल से हो जाएगी. ऑलरेडी आज CST से है. आज CST से 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है. पनवेल से it will, I think, decrease from CST through Panvel, it will be 1 hour. That's what they are saying, on a faster pace. Secondly, कुर्ला and few places of railway. आप में सब लोग रेलवे में ट्रैवल करते हैं बॉम्बे में, तो रेलवे यार्ड सुना होगा या देखा होगा. रेलवे जहाँ पे सब रेल पार्क रहती है. भीवपुरी करके एक एरिया है जो करजत से 3 किलोमीटर की दूरी पे है. रेलवे ने वहां पर नोटिस निकाला है, एक्विजिशन बाकी है. दे आर शिफ्टिंग द होल रेलवे यार्ड ओवर देयर. सो राइट नाउ द सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी
if you see, he's an ex IMM and very professional person. वो 6 एकड़ के दिल्ली के रेलवे स्टेशन को ऑलमोस्ट he'll get a revenue of more than 20,000 crore for the central government. 6 एकड़ के उसको पूरा का पूरा ऑफिस ये वो होटल सब डेवलप कर रहे हैं. सो he's brought railway into profits, good profits in last quarter also. सो ये भी प्रोजेक्ट उनके थ्रू ही है कि यहाँ पर भी जितनी कुरला है बाजू में रेलवे यार्ड है सब शिफ्ट करो, यहाँ की ज़मीनें खाली करो, सब ट्रैफिक बार करो. इसके साथ में दे हैव प्रपोज्ड ऑलरेडी टुडे देयर इज एन करजत रेलवे स्टेशन इन प्लेस फॉर लोकल्स. दे आर मेकिंग अ न्यू रेलवे स्टेशन विच विल बी कॉल्ड करजत टर्मिनस. सो टुडे इफ यू सी प्रीवियसली 15 years 20 years back, if you and me were traveling anywhere outskirts of Mumbai, we were going to Mumbai Central. बाहर की ट्रेन वहीं से पकड़ते थे. लास्ट 10-15 साल में डिसेंट्रलाइज हो गया है. साउथ की ट्रेन है तो कुर्ला से निकलेगी, गुजरात की राजस्थान की है तो लगभग बैंड्रा से निकलेगी, और बाकी यहाँ से निकलेगी, बाकी बीटी से निकलेगी. सो इस तरीके से जो पनवेल टर्मिनस से भी काफ़ी गोवा की ट्रेन निकल रही है, उसी तरीके से करजत साइड में भी सब ट्रेन निकलेगी. सो दिस इज वेयर द पैराडाइम शिफ्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज टेकिंग प्लेस. When you will say already ये एयरपोर्ट बॉम्बे वाला तो प्लेस में है, न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट क्या करेगा, कैसे चलेगा? सो दे आर कनेक्टिंग द ओल्ड एयरपोर्ट टू दिस न्यू एयरपोर्ट थ्रू इन मेट्रो, 32 किलोमीटर मेट्रो कनेक्टिविटी हैज टू बी देयर. दे विल डीकंजेस्ट द होल सिटी ओवर देयर कंपैरेटिवली, स्लो बाय स्लो पहले ये चालू होगा. सो एक्सपेक्टेड है, दिस इज व्हाट वी सी दैट on the other side of the city where the development comes, where the infrastructure comes, जहाँ पर काम होता है, infrastructure आता है, लोग शिफ्ट होते हैं. तो there is a big opportunity for chartered accountants over there in multiple businesses, not only real estate over there. आप लोगों को गाइड कर सकते हैं. एंड टुडे compliances इतने बढ़ गए हैं ना, कोई भी बंदा बिजनेसमैन है या उसका स्टाफ है, they have a limit to address those issues. When they take professional advice from chartered accountants, they get in guidance, they get in direction, which everybody is taking today. And today if you see, as a chartered accountant, the spectrum which in terms of what a decade or 2 decades back you used to guide, or today what you are guiding is completely different. So spectrum काफ़ी change हो गया है. हर industry को आप जैसे professionals की ज़रूरत है. We invite all the chartered accountants over there. We'll be happy through your association to introduce to our members के through, if you have any freshers, chartered accountants, or any students who want to work with developers for an intern of 2 months 3 months to get an exposure कि भाई रियल एस्टेट कंपनी में होता क्या है, हमको 2 महीना एज ए इंटर्न जाना है, नहीं जाना है, पार्ट टाइम जाना है. We'll be happy. We'll invite, officially give letter to your whole committee, and we'll be happy to address the same. So that is all I had to say today. It is my gratitude today that I've been invited over here, and I'll be happy to hear you all post this session. Thank you. So much, sir, for setting the base on our today's program and insights. Thank you so much. And moving ahead, our next speaker and is none other than our very own past chairman of WIRC, CA Manish Gadia, sir, a visionary leader and a senior professional with practice experience in the field of GST and academic development. He is a chartered accountant in practice since 1997 and a partner in Messrs GMJ and Company Chartered Accountants, practicing in the field of GST, a co-author of book Statutory Obligation of Cooperating Housing Society, co-author of Handbook on Valuation, Handbook on EPC Contracts, published by CTC, a renowned academician and an eminent personality with proficiency in delivering more than 550 lectures on service tax and GST at ICI at various forums. He was a past chairman of WIRC of ICI, a founder, convener, and a core group member of the JB Nagar CP Study Circle of WIRC. Let's please join me, sir, in felicitating with a memento to Manish Gadia, sir.
ये आता है लाइट आ रहा था क्या बस नहीं आता है। Good morning, everyone. Dinesh ji, thank you for giving your word of wisdom and showing the way forward for the people who are staying in Mumbai. So, Rudresh, Regional Council Member, Bhavna, Coordinator, Vivek, my old friend, and it's an opportunity to meet various old friends also, Bidla ji, Rupa Madam, Vora ji, Balaji, and the list is long. But Dinesh sir, you have raised certain questions. So I just want to clarify that as far as the Institute of Chartered Accountant is concerned, it's not an association. We are the regulator of chartered accountancy, or you can say audit and or accounting profession in India. Like SEBI is regulating stock exchange, RBI is regulating bank, and RERA is regulating your sector. Like Institute is also regulating all the professionals, all the chartered accountants who are in India, whether into practice or whether into industry. So that is the only just the basic difference, and it is set up under the Act of Parliament, and we are working under the Ministry of Corporate Affairs directly. So we are making various representations also, and we have been invited by all the government bodies for any financial matter, any tax related matter, to give the views on each and every point. And definitely you have raised various issues that triple taxation is really we are also facing the same issue, being a professional, that stamp duty is there is no ITC, and GST of course is there, and in city like Mumbai it is 5%, effectively 5%. As you said, we were discussing in the morning before this session that the rate of maybe Andheri or maybe Panvel or that Palm Beach Road is 50,000 per square feet carpet. Really a service element what we see. कितना भी प्रीमियम होगा, कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट होगा, 5,000 के ऊपर नहीं, correct? But we are paying tax on 50,000. So we are ready to make a representation on this point, but we need a suggestion and a feedback from association like you, because you have more numbers on that. What is the actual service element? What is the goods? What is the service? So not only in city, because GST is a central law, so we have to see across India. So if we can gather some cost element on this aspect, so we can make a good representation on this aspect. And it is mandatory for each and every practicing chartered accountant who are practicing in India has to have minimum 40 hours of training each year. Yeah, if you want to practice. So just for your information. So today the topic is GST RERA on real estate sector. Sorry to say Dinesh ji, you are here, but the public को लगता है कि बिल्डर है तो मतलब कुछ भी चलता है. गवर्नमेंट को भी यही लगता है कि this is the most tough sector, and it is very difficult for even the government how to tax this sector. That's why they have set up a RERA. Various authorities are there, which are the actual regulatory authority, whether it is municipal corporation. They have their own set of things, fire brigade, sewerage, so many authorities you have to deal with. So it is really a tough sector, but as far as the interplay between RERA and GST is concerned, so what personally I feel is that as far as at least GST is concerned, it is a transaction based tax. Unless you understand the transaction, whatever you are going to advise to your client is always wrong. And what I have seen in case of, especially in real estate sector, Tulsi Realty will come to me for a project, maybe having a redevelopment or maybe having a sale agreement. Once I will see the project B,
again maybe the implication is totally different, because each agreement maybe by the same developer having a different aspect or different tax possibility. So each transaction, not in the same industry, in the same company, may have a different impact. So it's necessary first to understand from the owner, from the accounts team, from the project team, how you are going to execute this project. And then you should come out with your views. As far as RERA is concerned, again, various definition, various things, unless you understand how it's there, you will not be able to guide to your client. Like carpet. I have seen that in various times, at least 4 or 5 times, Dinesh has used word carpet, carpet, carpet. But what is carpet area? एक हमारा अंडरस्टैंडिंग था कि मेरे फ्लैट के 4 दीवारी के अंदर जितनी एरिया है दैट इज अ कारपेट एरिया. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. दैट वाज आवर अंडरस्टैंडिंग. बट उस टाइम पर सुपर बिल्डअप के हिसाब से एग्रीमेंट होते थे. और सुपर बिल्डअप में क्या कैलकुलेट होता था मुझे तो आज तक नहीं समझा. करेक्ट. वो पूरे कंपाउंड क्या बोलते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स का सब कुछ कवर हो जाता था. देन रेरा हैज कम आउट विद अनदर डेफिनेशन ऑफ कारपेट. So now it is commonly known as RERA carpet. So definitely Vivek is going to take in great detail, but what is the difference between what our understanding about carpet and what is there in the RERA carpet is totally different. So unless you will understand that, or maybe the promoter, many time in city like Mumbai, Dinesh ji ने भी कहा कि खाली redevelopment होता है because there is no land as such. Again, if you go there, what is the definition of promoter? There may be one owner, there may be a society, there may be a actual developer. उस developer ने development right लेके किसी और को दे दिया होगा, तो there may be 3-4 parties are involved. So whether all are promoter or not, what are their compliances, all this definitely Vivek is going to take in great detail. So what, just to conclude, is that it is very important first to understand the transaction, understand not only the GST law, but all the relevant laws also before guiding to your client. So I thank WIRC for giving me this opportunity to interact. Thank you. Thank you so much, Manish sir. I think Dinesh sir has set up the base of RERA, real estate, and Manish sir on GST. Now is the time to have that interplay on RERA and GST, for which we have our knowledge speaker, CA Vivek Laddha ji, for which I request CA Bhavna Maheshwari to kindly introduce the speaker. Okay. So good morning everyone. So before I take the pleasure of introducing our faculty and the speaker for today, I would like to express my gratitude to WIRC and Chairman Arpit Kabra to invite various eminent speakers always time and again on various subject matters of GST. We have been conducting sessions online and offline since past few weeks, and all were literally enlightening. So now without any further delays, I would with all my humility introduce Vivek Laddha sir. Sir is a chartered accountant, he is a lawyer, he is a cost accountant and a company secretary. He has worked on a research project with the Central Board of Indirect Taxes and Customs on IGOT project. He has trained GST officers at various platforms, and he has also been engaged by NASIN, LTO of Maharashtra, ICAI and ICMI for various training sessions. He has conducted 400 plus training sessions for all these officers. He has also authored 7 books on GST with renowned publisher Taxman. He has also been appointed as Chief Advisor at National Real Estate Development Council, Nedal and Karjar. Sir is also a chairman of GST Advisory Board of NIRC, the Institute of Cost Accountants of India. So with all
I request the audience to welcome sir with a huge round of applause. I request the dignitaries on the dais to present the moment to the sir. Sorry. Dignitaries, respected Dinesh Doshi sir, all respected Gadia sir, my dear friend Mahadevji Birla, he has come from Gujarat, and Dinesh sir. So with this, I should start my session because I have only 60 minutes, so I also have the next meeting with me. So let me initiate this session with the background that GST and RERA, how both of the aspects are actually affecting the industry as such. And let's make it in a very realistic manner, apart from all these PPTs and RERA is regulating the sector, and GST is for levy of the tax on the supply of the goods or services or both. Now a question arises, how GST is being affected by way of particular regulated law, that is Real Estate Regulation Act. Furthermore, it is also required to be assessed the impact of respective state rules which have been notified by the respective state governments. Of course, I will confine my session and I will restrict to my discussion in respect of Maharashtra. Like GST, we have central law, CGST and IGST Act, and then we have Maharashtra GST rules. On a similar lines, here we have Central RERA Act. हमारे यहाँ महाराष्ट्र GST Act भी है, but यहाँ Central RERA Act and then the respective state rules. Apparently, a question arises कि GST, when the GST is being levied on the supply of the goods or services or both, where is the point to connect the RERA as such? Because you may observe or you may notice that with effect from 1st of April 2019, we had number of notifications ranging from 3/2019 central tax rate to 8/2019 central tax rate.
And apart from this, we also had amendment notification, that is 16/2019 central tax. This is not the rate notification. So 3 to 8 is the rate notification, and 16/2019 is the other than the rate notification. पूरा का पूरा इंडस्ट्री एक नए रिजीम में शिफ्ट हो गया. सो जीएसटी में भी जीएसटी फेज 2. Am I not audible? Okay. हेलो ये चल रहा है ना? हाँ चालू है हेलो. बंद हो गया, चेक कर दो. चालू एक मिनट रुकना. चालू है. Hello. Okay. I'm sorry. So here we have phase 2 in GST. So GST phase 1, which came into effect from 1st of July to 31st of March 2019, and this is the GST phase 2, which is actually effective from 1st of April 2019 to till date. पहला पैराडाइम शिफ्ट क्या था? विद आईटीसी की रिजीम से शिफ्ट होके वो विदाउट आईटीसी पे चला गया. और दूसरा रिजीम क्या था, दूसरा शिफ्टिंग क्या था? दैट इज फ्रॉम द ओवरऑल अप्रोच ऑफ लुकिंग द एंटायर ट्रांजेक्शंस फॉर ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज टू रेरा स्पेसिफिक प्रोविजन. So RERA based provisions in fact. तो 1 अप्रैल 2019 से हम लोग RERA पोजीशन में आ गए. लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है that how RERA, whether the RERA was really in effect with effect from 1st of April 2019. Why I am saying so? Because RERA का implementation पहले भी था to the some extent. और अभी आप लोग असेसमेंट और इन सब चीजों को डील करेंगे तो ऑब्वियसली ये पिक्चर भी आपके सामने आएगी. वी से फॉर एन एग्जांपल, वी हैड अ रेट नोटिफिकेशन 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट. पहले एक बार पूरा अंडरस्टैंडिंग लीजिए एंड देन विल गो फॉर दिस टॉपिक्स. 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर वी हैड सीरियल नंबर 3 HSN 9954. And if you note the item number 5, clause DA, low cost housing up to 60 square meter, and if you provide the composite supply of construction services, composite supply of works contract in respect of the low cost house having 60 square meter maximum, and which has been given the infrastructure status by way of Ministry of Finance. ये वर्डिंग था. लॉ कॉस्ट हाउस, the cost was not measured in the notification as such, but उस लॉ कॉस्ट हाउस का मेजरमेंट दिया उन्होंने 60 स्क्वायर मीटर, and which has been given the infrastructure status. तब उसका रेट 12% चल रहा था. And if you read the Ministry of क्योंकि जिस चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है वो नोटिफिकेशन से दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन से. एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन केम इनटू पिक्चर ऑन 31st of March 2017, गिविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग, और उन्होंने उसको कारपेट एरिया पे बेस बनाया. तो 60 स्क्वायर मीटर लॉ कॉस्ट हाउसिंग बेस्ड ऑन कारपेट एरिया, and carpet area was further defined in the Ministry of Finance notification, giving the reference of RERA only. तो RERA पहले भी था to the extent, yes of course. अभी पूरा का पूरा इंडस्ट्री RERA पर शिफ्ट हो. अभी आप रेट नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे 11/2017 जो एज अमेंडेड हुआ 3/2019 to 8/2019.
तो वहां क्या लिखा है? एवरीथिंग हैज बीन रिगार्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. पहले था कॉम्पोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इतना ही था. रेजिडेंशियल हाउस है, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस है, उसके लिए अपनी अपनी रेट्स थी. अभी इन्होंने बोला है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. तो जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का कर रहे हैं या कॉमर्शियल अपार्टमेंट का कर रहे हैं इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, द रेट्स आर बीइंग डिटरमिन्ड इन दैट मैनर. And when we see the definition of real estate project, it has been, borrowed from RERA only. उन्होंने बोल दिया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का मतलब वो है जो दैट इज असाइन, और बोला है कि वो है जो रेरा में डिफाइंड है. सो अभी यहां पे पूरा का पूरा गेम प्रोजेक्ट पर चल रहा है कि प्रोजेक्ट के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर टैक्स रेट ये, प्रोजेक्ट के कॉमर्शियल अपार्टमेंट पे टैक्स रेट ये. Now, what is the meaning of project? This is not defined in the GST law. This is defined in the RERA only. So now the interplay comes. If something is not project as per the RERA, what will be the tax rate? This is also the question. And if the particular project is the project as per the RERA, but if that project is not registered under RERA, what shall be the impact? And if the project is the project as per RERA, it is, and if it is not required to be registered under the RERA, then what shall be the impact? आप समझ पा रहे मेरी बात को? क्योंकि इन्होंने तो सिंपल बोला है कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, दैट इज से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और द प्रोजेक्ट अदर देन द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. These are the rates. So the very first question which arises to us, that if a project is the project as per the RERA, what shall be the impact? If the project is the project as per the RERA but not registered under RERA, what shall be the impact? And if it is not required to be registered under the RERA, then what shall be the impact? Here let me tell you, the word project is defined in such a manner which almost covers everything. Everything has been covered. इन्होंने ये नहीं बोला है जीएसटी लॉ में कि द प्रोजेक्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर रेरा तो ये रेट ऑफ टैक्स होगा. उन्होंने बोला है प्रोजेक्ट का मतलब वो है जो प्रोजेक्ट रेरा में डिफाइंड है. वो रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है, इट इज नोवेयर अफेक्टेड. वो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है या नहीं है, इट इज नोवेयर अफेक्टेड. सो मेनी टाइम्स एक क्वेश्चन अराइजेस कि सर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है तो क्या करेंगे, और रजिस्टर नहीं किया तो क्या करेंगे. द कंक्लूजन इज यू हैव टू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड. द प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट. प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज ZK में डिफाइंड रेरा में, और रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 ऑफ रेरा में. वहां उन्होंने बोला है कि लैंड पीस है वो अगर 500 स्क्वायर मीटर को एक्सीड नहीं करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं, और आपका यूनिट इन नंबर 8 से एक्सीड नहीं करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं. एंड द कंडीशंस आर ऑल राइट, एंड नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस. तो मुद्दा ये है कि ऐसे केस में रेट वही होगा जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट होगा. कि आपका रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता है. प्रोजेक्ट है या नहीं है, ओनली दिस पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड. दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. नाउ व्हेन आई डू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ impact of RERA into the GST aspect, then we are able to notice that the ITC computation, the common credit reversal, is also based on the carpet area. एक देखिए इस इंडस्ट्री को आप समझिएगा. 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2019 तक जो कॉमन क्रेडिट रिवर्सल होता था वो टर्नओवर बेसिस पे होता था. पूरी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री लो, मैन्युफैक्चरिंग लो, सर्विस लो,
रियल एस्टेट लो, XYZ कोई भी लो, ट्रेडिंग लो, कोई भी, उसके लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ कोड था हमारे पास। और ये मैं इसीलिए भी बता रहा हूं क्योंकि असेसमेंट में ये सब चीजें बहुत काम की। उन्होंने बोला कि आपको टर्नओवर बेसिस पे कॉमन क्रेडिट रिवर्सल करना है। इफ यू रीड सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, व्हाट डज इट से? वेयर अ पर्सन where a registered person uses the goods or services or both commonly for the purpose of effecting the taxable supply and exempt supply, in that case the ITC shall be restricted to the extent of the taxable only, to the exempt only. तो ITC exempt part तक ही restricted रहेगी, meaning thereby other than the exempt part को छोड़ के वो सारा का सारा आपके लिए eligible हो जाएगा। And that computation is required to be performed in a manner which is prescribed, and the same has been prescribed in Rule 42 and 43. So earlier we had the turnover based computation कि आपको देखना है exempt turnover divided by total turnover multiplied by common credit. And the problem in that particular computation was कि वो yearly basis पे आपसे एक final computation करवाते थे। Say in the very first year, आप समझिएगा, in the very first year जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो क्रेडिट का कंपोनेंट ज्यादा होता है, एंड एज द प्रोजेक्ट गोज टू द नेक्स्ट ईयर एंड ईयर्स, है ना, आपका क्रेडिट का प्रोपोर्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और इनिशियल ईयर्स में आपका सेल ज्यादा होता है, राइट, बुकिंग ज्यादा होने लगता है। अगर वो रेडी प्रोजेक्ट के में इंटरेस्टेड नहीं है बायर्स, तो ऐसे केस में इन जनरल एक पैटर्न हम लोग लेकर चलते हैं। So in a case where the bookings have been at the higher side and credit proportion has already been taken in 17, 18 and 18, 19, तो impact क्या आ रहा था कि क्रेडिट का, कॉमन क्रेडिट का प्रोपोर्शन क्या हो रहा था, एग्जाम डिवाइडेड बाय टैक्सेबल। तो एग्जाम उस प्रोजेक्ट में हो नहीं रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग हो रहा है, एग्जाम हो नहीं रहा है। तो मेजर ऑफ द क्रेडिट्स वर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, और तब टर्नओवर बेस पर ही ये कैलकुलेशन था। और आज जो डिपार्टमेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, 17, 18, 18, 19 के लिए भी वो कारपेट एरिया पे कैलकुलेशन कर रहा है, विच इज नॉट प्रेवलेंट एज सच, वो प्रेवलेंट है ही नहीं। जिसका कंप्लीशन 18, 19 से पहले ही कंप्लीट हो गया है, ऐसे केस में देयर इज नो कारपेट एरिया केम इनटू द पिक्चर, नो कंप्यूटेशन ऑफ रिवर्सल बेस्ड ऑन द कारपेट एरिया। लेटर ऑन गवर्नमेंट रियलाइज दिस मिस्टेक कि अरे ये तो इंडस्ट्री अलग है, हमने तो सबको एक जैसा सोच के बनाया, एंड दैट इज व्हाई दे केम अप विद द कॉमन क्रेडिट रिवर्सल बेस ऑन द बेसिस ऑफ द कारपेट एरिया। और अब इन्होंने बिल्कुल रैशनलाइज कर दिया है कि क्योंकि कारपेट एरिया इज अ मोस्ट लॉजिकल थिंग, यू नो, तो उन्होंने इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे लिए बनाया कि नाउ रूल 42, 43 ITC रिवर्सल कंप्यूटेशन फॉर इंडस्ट्रीज एट लार्ज, real estate industry set up a separate set of provisions, and for other industries a uniform pattern. Then we have, you know, the project is being run, right? एक क्वेश्चन और हम लोगों के सामने आता है, because RERA says कि आपको 70% जो कलेक्शन है वो आपको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ऑलराइट, नाउ a question arises कि जब भी आपका कलेक्शन अकाउंट से एक सेपरेट अकाउंट में पैसा जा रहा है, या जिसको आप रिटेंशन अकाउंट भी बोलते हैं, whenever the 70% अमाउंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, यू नो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, तो 70% जो कलेक्शन अकाउंट से पैसा निकल के आपको रिटेंशन अकाउंट में आता है, एन इश्यू अराइजेस कि टाइम ऑफ सप्लाई एग्जैक्टली कब ट्रिगर करेगा, क्योंकि 70% अकाउंट किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी in respect of the cost of construction and land. तो इश्यू अराइजेस कि टाइम ऑफ सप्लाई कब ट्रिगर करेगा, बिकॉज इफ यू रीड द प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई यू विल कम टू नो कि टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द रेसिपिएंट, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, and date of issue of invoice is further determined by section 31 subsection 5 in case of continuous supply of services. और continuous supply of services का केस होता है बिल्डर वाला केस, ओके,
और वहां ये बोलते हैं कि व्हेन द माइलस्टोन्स आर गिवन इन द सेल एग्रीमेंट, तो माइलस्टोन जो भी माइलस्टोन आप बोलते हैं 20 इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, 50 इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, तो एज एंड व्हेन दैट माइलस्टोन गेट्स ट्रिगर्ड, the date of issue of invoice is triggered. मतलब you have to issue the invoice on or before that date only, right? In case of, because it is the case of supplier services, I am sorry, so within 30 days from that date also the invoice can be issued as per rule 47. Now the point is कि जब आपका कलेक्शन अकाउंट में पैसा आता है, रिटेंशन में जाता है, तो which account they are talking about? So GST law is again nowhere affected of this provision. बोल रहे हैं फाइनली आपको पैसा मिला है ना, जिस डेट को पैसा मिला है उसी हिसाब से आपका टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन ट्रिगर होगा. तो ये भी एक क्वेश्चन, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री में पूछा जाता है कि सर 70% ही तो इस प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव पे सोचा जाए टाइम ऑफ सप्लाई को या पर्सन ओरिएंटेड सोचा जाए? तो टाइम ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन के व्यू पॉइंट से ड्राफ्टेड. Are you getting my point? Rate has been drafted as per the project. Is this clear to you? So time of supply will be based on the natural provisions regardless of the fact कि आप कितने अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, किस अकाउंट में कहां पैसा आ रहा है. And another question comes into play, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने रजिस्ट्रेशन से अपना जर्नी शुरू किया है कि प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ है, बैंक खाते में पैसा है, एंड द प्रोजेक्ट इज रनिंग नाउ. अब थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं, पूरा एक स्टोरी की तरीके से इस सेशन को लीजिए आप. When the project is in the running stage, then in that case a concept of 70-80 comes into the picture. 70% is the formula being determined by RERA, 80% formula is being determined by GST law. What is this 70? That I have already mentioned you. What is the 80? That I am supposed to mention, wherein the tariff notification 11/2017 central tax rate. आप उस नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग को देखिएगा, वहां पहला कॉलम आता है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम आता है HSN, थर्ड कॉलम आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेज, और फोर्थ और फिफ्थ कॉलम आता है रेट ऑफ टैक्स, और फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ कॉलम, एंड देन नेक्स्ट कॉलम आता है कंडीशंस. नाउ द कंडीशन सेज 80% ऑफ योर प्रोक्योरमेंट of input and input services shall be made from the registered supplier only. तो आपको 80% procurement registered supplier से ही करना है. And in a case where the deficit arises, you have to pay the tax on the RCM basis. अब आप देखिएगा रेरा में 70% का कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है. वो बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड, उसके लिए ही आपको 70% शिफ्ट करना है फ्रॉम रेरा कलेक्शन अकाउंट टू रेरा रिटेंशन अकाउंट. हियर एक्सपेंडिचर, दोनों एक्सपेंडिचर साइड, हियर दे आर सेइंग 80% ऑफ योर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज shall be procured from registered supply. In case if the deficit arises, that deficit, on that particular deficit you have to pay the tax on the RCM basis at the rate of 18%. Confusion of all this notification मैंने एक लाइन में बोला. Now 70% में क्या कंसीडर किया जाएगा, ये अपने आप में एक सेपरेट पॉइंट है, और 80% में क्या कंसीडर किया जाएगा और क्या कंसीडर नहीं किया जाएगा वो अपने आप में एक पॉइंट. So that 70% is saying cost of construction and cost of land. This cost of land is not considered while calculating the 80% for GST purpose. क्योंकि अगर वो 80 हो जाएगा तो पूरा वो तो लैंड अपने आप में उसको कवर कर डालेगा. Right? Now it is saying, आप ध्यान रखिएगा, capital goods is not considered for the purpose of 80% computation. Capital goods आप unregistered person से भी purchase करें, they are not saying anything about it. But input और input services आपको registered से procure करना है to the extent of 80%. And this 80%, please take care, 80% computation is required to be done on an annual basis, and 70% is for the project basis. Again, it's a landmark point.
This 80% computation is required to be performed on an yearly basis. Furthermore, they say कि सीमेंट जो है वो 80% के लिए, सीमेंट shall always be bought from the registered supplier. अगर आप उसको अनरजिस्टर्ड से करते हैं, अगेन उसके लिए आपको मंथली बेसिस पे आरसीएम पे करना है. तो एक्सेप्शन में भी फिर एक एक्सेप्शन आ गया आपके लिए. Okay, and here the cost of construction and land is to be computed on the basis of project. This is again a very important point. Now, notification further says, आपको आपके इनवर्ड सप्लाई का डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोजेक्ट वाइज करना पड़ेगा. यू हैव टू हैव द प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग विद यू. तो आपको एक कॉस्ट सेंटर बनाना है, उस हिसाब से हर प्रोजेक्ट के लिए अकाउंटिंग करना. मतलब ये 80% कंप्यूटेशन इज नॉट फॉर अ पर्सन, इट इज नॉट क्वा पर्सन, इट इज क्वा प्रोजेक्ट. प्लीज. नो, इसीलिए मैंने लैंड स्पेसिफिकली मार्क कर दिया था. एफएसआई, एडिशनल एफएसआई, लीज प्रीमियम, टीडीआर, नथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस. ओके, so this 80% computation is also for expenditure, 70% computation is also for the expenditure. But expenditure का nature क्या है? You know, the criteria are different. And all these points do affect a lot while, you know, doing the planning and all. And the project, if the project is being run, then another question arises. What will be the impact of GST on these expenditures? जब आप रेरा में रजिस्टर कर रहे हैं, you have to pay the registration fees and issue arises, क्योंकि एक एंट्री है, आप देखेंगे 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट. If the services are provided by the government, these are subject to RCM. Of course, there are few exceptions. तो जब भी आपको FSI मिल रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, फॉर विच यू आर इंकरिंग द एक्सपेंडिचर. एंड नाउ वी हैव द क्वेश्चन कि क्या जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है विच इज सब्जेक्ट टू आरसीएम और नॉट. बट हम बोल रहे हैं आरसीएम तो बहुत बात की बात है. वी हैव अ नोटिफिकेशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड विच सेज दैट जब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है बाय वर्च्यू ऑफ अ लॉ एंड इफ यू आर पेइंग द registration fees or in any name, this is exempted by virtue of a notification. So जो कुछ भी महाराष्ट्र में महारेरा में अपना फीस का क्राइटेरिया है, डिपेंड करता है कारपेट एरिया क्या है, या आपका लैंड का प्रोजेक्ट है, या आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है. तो जो कुछ भी आप फीस पे कर रहे हैं, उस फीस पे जीएसटी का एग्जम्पशन है. आरसीएम तो बहुत बात की बात. I mean to say, there is no question of leviability of the tax on the RCM basis, because this supply itself is exempted as such. Then हेलो, कुछ फोन आया क्या? एक मिनट सर, एक मिनट. नहीं तो उसका भी बंद हुआ रहता ना यहाँ से. जी जी, थैंक यू. वो बताओ करिएगा. Yes, so where I was, in respect of expenditure, how a GST is supposed to be dealt with. When you are paying the expenditures,
in respect of the registration expenditure that I mentioned. Now let us go further. In the journey of the project, you also come across with different type of transactions. Another transaction is pass-through charges, in a name of society maintenance. आप बहुत आराम से समझिए. I have covered number of issues. मैं अपना पूरा बहुत लंबा चौड़ा ऐसा मत सोचिएगा सर ने कुछ बनाया नहीं इसीलिए पहला रख के रखा है, ऐसा नहीं. I have prepared a very detailed presentation for you. And believe me, मेरे हिसाब से पहली बार ही मैंने इतना डिटेल प्रिपरेशन किया होगा. बाकी हर बार मैं पॉइंटर्स बना के लाता हूँ. इस बार मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए. तो एक बार मैं अपना पूरा स्टोरी टेलिंग आपको बताता हूँ, देन वी विल गो फॉर द इशू बाय इशू. Where was I? Yes. In the journey of a project, you collect the amount from allottees. Yes, this is also a different kind of phenomena. In GST law, you will notice the word recipient. Section 2, clause 93 of CGST Act defines the meaning of recipient. The recipient means a person who is liable to pay the consideration. Right? फिर एक पैराग्राफ पहली बार जीएसटी में मैंने पढ़ा बायर वर्ड, और वो पढ़ा वर्ड 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एज अमेंडेड टाइम टू टाइम. तो यहाँ जब 3/2019 जब नोटिफिकेशन हमारे पास आया 1 अप्रैल को, तब ये वर्ड बायर है. एंड द वर्ड बायर इज नॉट डिफाइंड, राइट? रेसिपिएंट में बोला है द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसीडरेशन. हियर द वर्ड बायर, एंड इन रेरा देयर इज अ वर्ड अलॉटी. ओके. Society maintenance charges when is collected by the builder or by the promoter, in fact, because here we have the word promoter, not the builder. और एक्चुअली देखा जाए तो बिल्डर वर्ड लॉ में कहीं है नहीं, क्योंकि जीएसटी जिस हिसाब से ड्राफ्ट किया गया वो तो ही बोला गया सप्लायर, दैट्स ऑल, राइट? तो बिल्डर कहीं था ही नहीं. लेकिन जब हम थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं, कई बार इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी पर डाल देते हैं. Now it says whenever the promoter has collected the society maintenance charges from the allottee, what is the treatment of this? पहला point, when the sale agreement which is uploaded by you, the model agreement which is uploaded by you on the general portal, that is the model agreement. और फिर आप buyer when that agreement stipulates that a society maintenance charges shall be collected by the builder of so and so rupee. Again, a question arises whether there should be a tax on it. First question. If there is no tax, point is omitted. If there is a tax, whether the tax shall be levied at the same rate which is being applied on the construction services provided by the promoter to the buyer, or whether there is a concept of composite supply. The principle rate है तो principle पे चला, or whether it is both are the separate supplies or कोई different tax rate. If you see the wording of the notification 3/2019 central tax, it says supply of construction, composite supply of construction services. And when you being the builder collect the society maintenance charges from the buyer, that is not in relation to the construction services. And that is why even if the same is incorporated in the sale agreement, this is forming part of the sale agreement, you cannot say a composite हो जाएगा merely by saying the sale agreement का हिस्सा. Agreement में हो जाने से composite नहीं होता. Are you getting my point? Composite supply, you have to satisfy the conditions laid down under section 2 clause 30 of Central GST Act. They say there must be 2 or more taxable supplies. These should be naturally bundled, and one of which should be the principal supply. Right? Because it does not satisfy the conditions of section 2 clause 30, we cannot regard it as a composite supply. Meaning thereby is society maintenance charges shall be taxed at a separate rate, that is 18%.
तो अभी रेरा में उसको क्या करना है, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी, ऑफ कोर्स वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं है, तो वो 70 में नहीं जाएगा. तो व्हाट शुड बी द आइडियल प्रैक्टिस? आइडियल प्रैक्टिस शुड बी दैट यू हैव टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस इन अ सेपरेट अकाउंट. सेपरेट अकाउंट क्या हो सकता है, तो आपका रेरा कलेक्शन अगर आप उसमें ही सीधा लेंगे तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से सोसाइटी मेंटेनेंस का 70% भी रिटेंशन में चला जाए, and which is actually not for the construction of the project as such. That is why you cannot adopt that approach. Now, what should be done? The next step. Another approach can be, you can transfer in any account. Not नहीं लिखा है कि आपको ऐसा करना है. वो आप ही को समझना है कि exactly in what manner it should be planned. So second approach ये बोलती है कि इसको 30% वाले अकाउंट में दो, जिसको बोलते हैं फ्री अकाउंट या नॉर्मल करेंट अकाउंट आपका, उसमें आप कर सकते हैं. बट क्या वास्तव में वो करने से आपका प्लानिंग प्रॉपर होगा? There is no violation in doing this, but in my view, it should not be transferred in 30% account, because you have to have the separate accounting of society maintenance. आप कर सकते हैं 30% में भी separate accounting, but if you have a dedicated account, the more transparency is there before the buyers of the apartments, and that is why you should separately collect it. अब वो practically कितना होता है नहीं होता है, that depends. कितना लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, या उनका इंटेंट क्या है, वो सब चीजें भी बहुत मैटर करती है. Because society maintenance charges is always a gray area, which we all understand. And when the project goes to the completion stage, अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है. If a booking happens to be after the date of the completion certificate, booking happens अगर आपका 1 रुपया भी मतलब एडवांस में मिल गया, मतलब before that particular threshold time limit, the threshold time limit is mentioned under para 5B of schedule 2, right? आज पहले मैं मतलब मैं इतना प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपको उस चीज का पता है, क्योंकि मुझे इंटरप्ले करना है, मैं उतना डेप्थ में चल रहा हूँ तो इंटरप्ले नहीं कर. So schedule 2 para 5B with the backdrop of section 7 subsection 1A of central GST. Section 7(1)(a) क्या बोलता है कि अगर सेक्शन 7 की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप शेड्यूल 2 को रेफर करिए, जो बताता है कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, किसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा. और पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 says कि सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज shall be treated as a supply of services if unless the entire consideration is received after the cutoff date, and the cutoff date is earlier date of the date of completion certificate and the first occupation. So in the case where you receive or the booking after the particular threshold which has been calculated, in that case of course there shall not be the tax on that. और जैसे ही आपका इधर completion होता है, now once you complete it, उधर से 70% अकाउंट में आपको हाल देखना पड़ेगा. If there is any amount, you can freely utilize it. Then there is no restriction of the account that particular account. This is, the way of, looking both of the sides. And then again, a question arises: if you deliver the apartment to the buyer delayed in comparison to what you have agreed upon, then RERA law says that you have to pay the interest. Duties of promoter ने लिखा है कि आपको डिले होना है तो you have to pay the interest. और interest का रेट क्या होगा, that is also given in the right. तो आपका जो marginal rate होता है उस पर 2% है, right? उसमें आपको 2% ऐड करके और करना पड़ता है, so that is separate part. But what is the treatment of the GST? When you are collecting, पहली चीज आप डिले कर रहे हैं या बायर आपको डिले पेमेंट कर रहा है, तो ये दोनों साइड से लॉ में दोनों के लिए दोनों को माना गया. ऑब्वियसली दिस इज टू रेगुलेट द सेक्टर. तो ऐसा नहीं है कि वो प्रो बायर है या प्रो बिल्डर. एक्चुअली लॉ का इंटेंट ये नहीं है. लॉ का इंटेंट है टू रेगुलेट. नाउ इट सेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, इट सेज whenever buyer delays
pay the interest. Now the question comes into the picture: what should be the effect of GST on that particular item? Interest, whatever you are receiving. Law says under section 15, subsection 2, clause D, valuation, value of taxable supply. This is titled this. It says value shall include. पहले तो बोला है value shall be the transaction value which is actually paid or taken. And then 15 subsection 2 says value shall include. Clause D. Clause D क्या बोल रहा है? Interest on delayed payment of the consideration shall be added to the value of supply. Now you have to determine first thing whether it was a supply or not. अगर वो after the threshold or after the cut-off date आपने पैसा receive किया है, when the entire consideration is received after the cut-off date, तो फिर वो तो supply ही नहीं है और supply नहीं है तो inclusion का सवाल ही पैदा नहीं। और जो under construction booking हुई है, ऐसे केस में whenever you are receiving the interest from the buyer, in that case the same shall be forming part of the value of supply. तो क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इज मोड पर हमको जो एप्लीकेबल रेट है 1.5%, 7.5% और 18% एज पर द केस, क्या वो पे करना पड़ेगा? नो, दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि सप्लाई का ही नेचर पार्ट है कर रहा है. नाउ अगेन यू हैव टू गो बाय द फॉर्मूला व्हिच इज रिटन इन द नोटिफिकेशन, दैट इज 2/3 ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज, राइट? आपको यहाँ पर डेबिट नोट प्लेस करना पड़ेगा, साथ ही साथ में उसका 2/3 निकालना पड़ेगा. दिस 2/3 or 1/3 has been already challenged and this case has been won in the respective honorable High Court, Gujarat High Court, right? Manish Bhatt versus Union of India. I suppose it is the judgment of March or May 2020. वहाँ ऑलरेडी इसको अल्ट्रा वायरस कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है. बट वो क्या होगा अपार्ट फ्रॉम दिस? This is very clear that this is forming part of the value of the supply, and that is why you have to treat it as good as the nature of construction of services what you are providing. और उसी हिसाब से आपको 2/3 1/3 अगर आप वो कर रहे हैं कंजर्वेटिवली तो वही चीज आपको करके और आगे बढ़ना. On the contrary side, when you are paying the interest to the buyer because you have delayed, a question arises: is there any GST implication on it? तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सप्लाई है भी या नहीं? GST तो तब लगेगा ना जब सप्लाई हो, और सप्लाई तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायर इज नॉट डूइंग all these things in the course of business or in furtherance of business. Of course this is not regarded as a supply, and if there is no supply there is no question of levy of the GST, और मतलब मेरे को exemption तक भी जाने की जरूरत नहीं. तो पहला पॉइंट ये है. बट व्हाट इफ इट इज रिलेटेड टू द कमर्शियल अपार्टमेंट? तो इफ बायर इज परचेजिंग द कमर्शियल फ्लैट और कमर्शियल अपार्टमेंट फ्रॉम यू in the course of business or in furtherance of business, and if he is charging the interest from you by virtue of the past given in the well, तो फिर क्या होगा? उस इंटरेस्ट का क्या होगा? This is charge, right? Now this interest shall be the exempt supply by virtue of 12/2017 central tax. Of course, this shall be forming part of the aggregate turnover at the buyer's name if he is engaged into business or if doing it in the course of business or right? एक और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टॉलरेशन है? ये भी क्वेश्चन आता है. जब कोई प्रोजेक्ट में डिफेक्ट आता है, if I'm not wrong, you know, there is section 43 of RERA, if I'm not wrong, right? So we have my good friend Mahadevji Birla is also an author, taxman. You know, we work together. So I'm having a proud privilege to have him in the session. So section 43 says कि if there is any defect, आप देखिएगा चाहे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या एनी डेफिशिएंसी, in that case the promoter has to pay the compensation to the buyer.
Now, what shall be the impact of that or impact of GST on that compensation, which is being paid by the promoter to the buyer of the apartment? वापस आपको ये देखना पड़ेगा सप्लाई किसने किया है, क्या ये सप्लाई है या नहीं, किसने किया है, तो वापस अगेन सेकंड क्वेश्चन. सो यहां अपने आप में कोई सप्लाई नहीं है. इफ यू रीड द सर्कुलर 178 रिसेंटली इश्यूड, सर्कुलर 178, वहां बताया पैरा 5E, इफ यू रीड शेड्यूल 2, वो बोलता है अग्रीइंग टू एन एक्ट और अग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन or to refrain from an act shall be regarded as a supply of services provided. अब वो शेड्यूल सेक्शन 7(1)(a) जो आया है, पहले क्या था, सेक्शन 7 जिस वे में ड्राफ्टेड था उसमें शेड्यूल 2 को डायरेक्टली रेफर किया गया था कि कंसीडरेशन नहीं होगा तो भी हम बोलते हैं कि शेड्यूल 2 की जो एक्टिविटीज है दीज शैल बी रिगार्डेड एज सप्लाई. लेटर ऑन पार्लियामेंट रियलाइज्ड द मिस्टेक एंड दे लिंक विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कि सप्लाई में कंसीडरेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही शेड्यूल 2 को सप्लाई मानेंगे. नाउ द पॉइंट इज दिस इज वेदर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो कॉम्पेंसेशन के नाम से व्हाटएवर इज बीइंग चार्ज्ड बाय द बायर फ्रॉम द प्रमोटर, whether there shall be any implication of the GST on it. तो पहला तो मुद्दा वापस ये है जो अभी हमको गाडिया जी भी बता रहे थे कि आपको ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एनालिसिस करना, whether this particular activity is also regarded as a transaction of supply. तो मुद्दा ये कि आपने जो कुछ भी पे किया है क्या कंसीडरेशन की है या नहीं, and if you leave the definition of consideration under section 2 clause 31, that is consideration in relation to supply of the goods or services. So what you are supplying assets, being a buyer, what you are supplying. So circular 178 says you are not supplying anything on it. And if you are not supplying anything on it just by receiving the money, you cannot treat it as a supply, and that is why there can be no stretch of imagination to apply the GST. Are you getting my point? And law further says कि अगर बायर बुकिंग कैंसिल करना चाहता है तो म्यूचुअल कंसेंट से उसका कैंसिलेशन हो सकता है, एंड वाइस वर्सा प्रमोटर कैंसिल करना चाहता है तो म्यूचुअल कंसेंट से वो कैंसिल हो सकता है. Whenever it is cancelled, now I am telling you a very critical point in this. Very critical. When the buyer is returning, buyer is cancelling that particular booking. Buyer is cancelling the booking. RERA is permitting it based on the mutual consent. यहाँ interplay दे दिया. Can a supplier, promoter issue the credit note? भाई वो कैंसिल हो रहा है, रिफंड तो आपको करना है, ये तो यहाँ तक का तो कोई पिक्चर ही नहीं है, बिकॉज जीएसटी को प्रिंसिपल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी को जीएसटी से लेना देना. Okay, and you will notice a very key point which I am giving it. When a buyer is cancelling that particular booking, issue arises. Can a promoter, being a supplier, issue the credit note? Can a promoter issue the credit note on that particular cancellation? What's your say on this? Till next November. Okay, so you mean to say it can be. So law says under section 34 subsection 1, and please mind the wordings of section 34(1) verbatim. Section 34 subsection 1 says a supplier may issue, registered supplier may issue a credit note in 5 situations. First, जब आप वैल्यू ज्यादा चार्ज कर चुके हो, जब टैक्स ज्यादा चार्ज कर चुके हो, जब गुड्स रिटर्न हो रहा है, और तब जब सप्लाई में डेफिशिएंसी, चारों में से कोई चीज ना हो,
सर्विसेज रिटर्न नहीं हुआ। आप समझ पा रहे हैं? And this industry is keep on issuing the credit. If I read the law verbatim, okay, please apologize. मैं ये बोलता हूँ, if a supplier, if a promoter being a supplier issues the credit note, it should fall under section 34 subsection. If it is not falling, then what will happen? Because आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट नोट इशू करके हो क्या है? सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 says that it carries the reduction in the output tax liability. But natural. तो क्या जो रिडक्शन हो रहा है by way of issuance of the credit note, क्या वो वैलिड है या नहीं? और सोचिए, used credit notes have been issued, and if department keeps the eyes in that sense which I am reading, I don't know how they are reading. But if they keeps the eye in that sense, issue arises whether the credit note can be issued on this. Issue हो रहा है, वो सब चीज चल रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं चल रहा है और अभी तक क्या गवर्नमेंट ने इस पे एप्लीकेशन किया है या नहीं किया है, उन चीजों का बारे में मुझे नहीं पता. बट व्हेन आई रीड सेक्शन 34 सबसेक्शन 1, माय केस इज नॉट फॉलोइंग इन एनी ऑफ द सिलेबस. मेरा टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा नहीं था, मेरा टैक्स रेट ज्यादा अप्लाई नहीं हुआ, मेरा गुड्स रिटर्न नहीं हुआ, मेरी सर्विस में कोई डेफिशिएंसी नहीं, कैंसिलेशन मैंने बाय वर्च्यू ऑफ एनी रीजन, देन व्हाट विल हैपन? और डेफिशिएंसी के लिए तो आप रिडक्शन करेंगे ना, आप रिटर्न तो कुछ करेंगे. तो माय केस इज फॉलिंग नोवेयर, एंड दैट इज व्हाई अ क्वेश्चन मे अराइज दैट वेदर अ क्रेडिट नोट कैन बी इशूड इन दिस रिगार्ड. इसके पॉसिबल आर्गुमेंट्स हैं, आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दिस, बट दिस इज व्हाट द रीडिंग ऑफ सेक्शन 34(1). And with this, the project gets finished, everything gets completed, and you know the credit reversal which I have already, yes, credit reversal. क्योंकि जब आपका completion certificate आपको मिल जाता है, तो लॉ ये बोलता है ongoing प्रोजेक्ट के केस में आप ध्यान रखिएगा, जो 1 अप्रैल 2019 से पहले चलने वाली किसी प्रोजेक्ट पर आपको आईटीसी रिवर्सल का कंप्यूटेशन कैसे करना है. दिस आप देखिएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर 31 मार्च 2019 से तक, मतलब उससे ऑन और बिफोर 31 मार्च 2019 तक अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो आज की तारीख में रूल 42 में उसका कोई प्रोविजन नहीं कि कारपेट एरिया पे आपको रिवर्सल करना है. बट इफ दैट प्रोजेक्ट कंप्लीट्स आफ्टर 31 मार्च 2019, मान लो 2018 में वो चालू हुआ एंड दैट इज द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जिसपे आप आईटीसी का बेनिफिट ले रहे थे फॉर्म 4 फिल करके, राइट, एनएक्सए 4, राइट. तो पॉइंट ये है कि ऐसे केस में आपको आईटीसी रिवर्सल कैसे करना है. इट सेज इन द ईयर इन व्हिच यू रिसीव द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, टिल दैट डे आपको कारपेट एरिया जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसमें कॉमन क्रेडिट आपको निकालना पड़ेगा, कारपेट एरिया के बेसिस पे रिवर्सल करना पड़ेगा. लेकिन जो प्रोजेक्ट व्हिच हैव बीन कमेंस्ड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2019, तो बोले एब्सोल्युटली आपको कारपेट एरिया पे, तो अदरवाइज जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है जिसमें आप आईटीसी का बेनिफिट ले रहे थे, तो कमेंसमेंट डेट से लेकर कंप्लीशन डेट का टोटल क्रेडिट, उसमें से आपको एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आपको निकालना है, उसका रिवर्सल आपको कारपेट पे करना है. लेकिन जो प्रोजेक्ट फ्रेश 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स कमेंस हुए हैं, उस पे क्रेडिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो कारपेट एरिया के बेसिस पे ही करना है. प्लीज टेक केयर, लॉ ने स्पेसिफिकली नहीं रखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टैरिफ में, तो रेट विदाउट आईटीसी इज ऑलवेज बीइंग ट्रीटेड एज एन एग्जम्प्ट सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ कॉमन क्रेडिट, राइट. जब आपका आईटीसी बना है, तो उसको एग्जम्प्ट सप्लाई भी मानते हैं, और जब कॉमन सप्लाई होगी, मतलब ये वाली सप्लाई 1.5% विदाउट आईटीसी, 7.5% विदाउट आईटीसी, दीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एग्जम्प्ट सप्लाई. और जब भी आपका टैक्सेबल सप्लाई के साथ में कॉमन सप्लाई हो, एग्जम्प्ट सप्लाई हो रहा है, इन दैट केस यू नो द कॉमन क्रेडिट रिवर्सल कम्स इनटू द पिक्चर, एंड दैट इज व्हाई कारपेट एरिया के रिवर्सल, कारपेट एरिया बेसिस पे जो आप रिवर्सल कर रहे हैं, उसमें ऐसी सप्लाई को भी एग्जम्प्ट सप्लाई के मैग्नीट्यूड में इंक्लूड किया है, मीनिंग देयर बाय
If you have any question, let me know so that I can answer to that. And then I will go to the quick glimpse of those issues which I have covered for you. So this was the entire story of project, right? Which I could cover in the given time frame. Okay. So there is no much further. Now registration is required or not, these are few aspects. So RERA में आपको registration की जरूरत है या नहीं? Own construction. If you are exclusively engaged in the own construction, in RERA you don't require any registration because there will be no supply. There is no question of crossing the threshold limit of the aggregate turnover, and thereby there will not be any requirement of the registration under the RERA. For redevelopment project, you generally do not require the registration under RERA, but in case out of the redevelopment project, if you are intending to sell even a single unit, and if all the rest of the conditions are satisfied of section 3 of RERA, in that case you will have to undergo the registration process of RERA. Redevelopment project में वापस क्वेश्चन ये आएगा कि क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, मैं उतना भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. सेल ऑफ रेडी प्रोजेक्ट. तो रेडी प्रोजेक्ट है, रेडी यूनिट्स है, मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट्स है. इट मींस जीएसटी इज नॉट गोइंग टू come into the picture. Reason behind this is not treated as outward, these are not treated as supply, or due to the constitutional limitation or immovable property हो जाएगा, and then GST ऊपर नहीं आएगा. Sale of ready project, yes, GS RERA में बोलता है अगर आपको मतलब आपने प्रोजेक्ट को भी कमेंट्स किया और प्रॉब्लम नहीं उनको, लेकिन if you are intending to sell it, तो सेल एग्रीमेंट में एंटर होने से पहले you will have to have the RERA registration. Development of the plotted land, again it is considered as a project, and that is why if the rest of the conditions are satisfied, you will have to undergo the RERA registration. But in GST, as the circular has already clarified, okay, this is also very subjective. लेकिन ऊपर से मैं बोलूँ तो developed land जो है उस पे GST नहीं है, वो out of the scope of supply है, being falling under the entry number 5 of Schedule 3. Which is neither to be treated as supply of goods, not to be treated as supply of services. So वहाँ GST का registration का जरूरत नहीं है. Property to be let out, RERA is not required to be registered because you are not selling assets, you are not proposing to sell assets. But yes, rental income उससे आएगा तो आपको देखना है कि whether your aggregate turnover exceeds the limit or not, right? And sale of plotted land I have already discussed. Now, yes. What will be the impact in GST if the registration under RERA is revoked? So we have section 7 in RERA. तो registration जब revoke हो जाएगा, यहाँ देखिए आप GST में बोलते हैं cancellation of registration, उसी को यहाँ पे बोला है revocation of registration. Please take care, GST में बोला है revocation of cancellation of registration. तो वो होता है resume करना, restore करना. यहाँ revoke जो है वो cancellation को ही pretend कर रहा है. So the point is in what cases the registration may be revoked. Okay, I read a particular provision to you. Section 7 subsection 1 clause C. It says the authority may on the receipt of the complaint or suo motu in this behalf or on the recommendation of the competent authority revoke the registration granted under section 5. After being satisfied that the promoter is involved in any kind of unfair practice or irregularities. So if you are engaged in any kind of unfair practice, that is also further defined. One part of that particular definition, one limb of that definition, I am briefing it before you. It says unfair practice or irregularities means inter alia. The promoter permits the publication of any advertisement or prospectus, whether in newspaper or otherwise, of the services that are not intended to be offered. So if you are, mis-selling it by way of the advertisement, in that case, that registration may be revoked. The harsh is said. Okay, generally not taken, but they may. So there have been precedent in RERA also in this regard. तो जब revocation हो जाएगा तो क्या होगा?
तो उसका कॉन्सिक्वेंस सेक्शन 12 रेरा में बताते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, where any person makes an advance or a deposit on the basis of the information contained in the notice, advertisement or prospectus, or on the basis of the model apartment, plot or building as the case may be, and sustains any loss or damage by reason of any incorrect, false statement included therein, he shall be compensated by the promoter in the manner as may be provided. So he will be rewarded the compensation. He will be rewarded the compensation. तो जब compensation दिया जाएगा तो क्या compensation पे GST होगा? Again, I am of a view there will not be any compensation. There will not be any GST implication on this because there will not be engagement of any supply on this. So there will not be a consideration against any supply. आप compensation दे रहे हो but आप supply क्या करें? Because the supply itself is not involved. Merely that particular money which is being flown by one person to another person cannot be regarded as a supply. Again, the same is for penalties. Penalty भी जब भी आपको पे करना है उस पे कोई GST का एप्लीकेशन नहीं है. The circular is also explicitly saying about it. This issue 5 has already been covered. These have been the set of notification which you must of course recall it. This is key takeaways just for the sake of knowledge. I have given a very beautiful synchronization. What is given in GST, what is not given in RERA. Few terminologies like the definitions are borrowed in GST from RERA. Like apartment, promoter, real estate project, carpet area, RERA, real estate regulator. Same definition is given in GST. Yes, ये चाहते तो उसको भी असाइन कर सकते थे बट पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं असाइन किया. डेवलपमेंट वर्क्स, एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स एंड इंटरनल डेवलपमेंट वर्क, तीनों वर्डिंग्स है, तीनों टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो आइडेंटिकली डिफाइंड है. एंड दिस वर्ड इज competent authority is the identical terminology which is defined separately in both of the laws. Defined in GST but not in RERA. Affordable residential apartment, commercial apartment and ongoing project. ये GST में defined है लेकिन RERA में defined नहीं. And defined in RERA but not in GST, that is completion certificate and occupancy certificate. The significance is there, but because due to time crunch, I am not moving ahead for this. Now, if I have already mentioned about this I have already mentioned. Already deleted, yes. The point is because the promoter is procuring the input services and capital goods, and if the tax rate is without ITC, 1.5%, 7.5% without ITC, whether that procurement which contains the input tax component, मतलब मैं कुछ खरीद रहा हूँ उस पे GST लग रहा है, तो वो जो GST है क्या वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माना जाएगा? यस, माना जाएगा. मीनिंग देयर बाय आप उसको 70% के लिए कंसीडर करेंगे. तो एक तो आप GST कलेक्ट कर रहे हैं, उसको आप सेपरेट अकाउंट में ले जा रहे हैं, राइट? दैट शुड नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द 70%. और एक जो GST आप पे कर रहे हैं टू योर सप्लायर, उसको आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मानेंगे इन केस व्हेन इट इज पर्टेनिंग टू अपार्टमेंट रेटेड एज विदाउट ITC. अगर वो 18% कमर्शियल अपार्टमेंट के लिए चलता है तो ऐसे केस में वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा बिकॉज़ ITC इज एलिजिबल. This 70%, 80% I have already mentioned. Interest, yes, this is already covered. After sales, covered. Society maintenance, this is covered. Yes, almost all thing is covered except a single point, that is RERA agent. Because in RERA, the RERA provides two types of registration for project and registration for agent. Now, if you read the word agent in GST law, तो वहां एजेंट को बहुत ही अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया. एक वर्ड एजेंट है, एक इंटरमीडिएट. और एजेंट वही है जो जनरली आप समझते हैं, ठीक है, who works on behalf of the principal in general, right? But if you read the provision of Central GST Act section 24 clause 7 that talks about mandatory registration for the persons who are falling in any of the category ranging from clause 1 to clause 11.
Clause 7 ये बोलता है that following persons are required to be registered mandatorily. Clause 7. If a person who is an agent and supplying the goods or services on behalf of the principal, in that case that agent is required to be registered under the law mandatorily. आप देखिए एक तो एजेंट वो है जो सिर्फ क्या करना है, you know, who matches both of the sides of the supply. तो सप्लायर को भी मिला है, रेसिपिएंट को भी मिला है, who is not performing the supply. एक जिसको बोलते हैं कमीशन, एक एजेंट होता है that is consignment. Consignment agent क्या करता है? Who makes the supply? Who makes, please emphasize on it. Who makes the supply on behalf of the principal? You are my principal, you are supplying to me, and I am supplying on behalf of you to anyone else. So what I am doing, I am receiving it from you and I am selling it out. Of course मैं P2P नहीं कर रहा हूं, लेकिन I am making a supply. तो ऐसे केस में वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है एजेंट के लिए. तो if there is a consignment agent, that agent is also subject to the registration. But here the RERA agent is not making any supplies, and that is why he is not subject to the compulsory registration as such. बस अब आपको देखना है कि उसका जो वैल्यू, उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, whether that exceeds the threshold limit or not, and based on that you will have to undergo the GST registration and the further compliance based on. With this, I finish my session. Thank you. We were talking about RERA carpet and carpet. What literally you have seen talking. What is the difference between RERA carpet and normal carpet? Okay. I suppose that all that just two wordings have been missed. If I request Mahadevji Birla, who is also an RERA expert, if you could please brief about it. I do not have the language verbatim over here. Net usable area, no, please. Good afternoon, everyone. Thank you, Realty. I think first I would like to tell you there is no concept of the RERA normal carpet area and RERA carpet area. I think industry experts are there. So now we have only carpet area. So no normal word is used, which we are saying. So if we talk about the RERA, the example of this own building. So we have this room and there is another room, right? So if we talk about the carpet area, earlier there was what industry used to say. So generally we understand the carpet area where we are using, right? That is the concept of the carpet area. So that is the concept before the RERA. Now the concept, there is a definition of the RERA. We say made usable area, including internal wall, excluding outside wall, and veranda and with bush area. Right? So if I talk about the carpet area, then this made usable area plus this internal wall will be considered as a carpet area. But my premises is having only two, or my house is having only these two rooms, that just the outside boundary wall will not be formed in the carpet area. So this is the concept. Yeah. So हम पहले पोस्ट तो पहले हमारा जनरल कंसेप्ट क्या होता था कि जितना मैंने चढ़ाई अच्छा किया ना वो मैंने कार्पेट लिया है. अब वो चढ़ाई का एरिया नहीं है बट वो जो दीवार है वो भी कार्पेट एरिया है. सो जो मेरा बाथरूम का एरिया है, जो मेरा और कोई भी इंटरनल किचन का इंटरनल वॉल है, दैट ऑल कवर्स अंडर द कार्पेट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. करेक्ट मी बैक नो. दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन्ड. Anything else? So is it clear to the point? So there is no. It's a without carpet. Thank you. Thank you. Yes. बोला कि आपको GST रिटर्न के ब्रीफ किया उसके बाद ये सब अच्छा लगा. Because practice में उसके लिए याद आई थी. Okay. That's okay. So what do you want to know on that? उसपे GST का एप्लीकेशन कैसा है वो मुझे जानना. Existing unit holder and Yes, I know. There is a bargaining happen between the existing member versus developer. One is a free area, existing 500 square foot, 500 देता है.
plus some 15-20%, 30% additional free of cost. Third thing is buying of some area from the same guy. All repercussion on society and individual is a general question. हाँ मैं understand this. थोड़ा brief दे दीजिए ना उस पे। थोड़ा नहीं होगा मैडम, वो बहुत बड़ा है एक्चुअली, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बहुत बड़ा है। आपने पूछा ना पूरी इंडस्ट्री एक तरीके से, राइट? तो इट्स नॉट दैट मच इजी, क्योंकि इसमें सारे एस्पेक्ट हैं, टाइम ऑफ सप्लाई का एस्पेक्ट है, वैल्यूएशन एस्पेक्ट है, रेट ऑफ टैक्स एस्पेक्ट है, क्या वो सप्लाई है कि नहीं है, मतलब एक डिटेल एस्पेक्ट है। नो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से उन सब चीजों को पढ़ना। पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी लॉ में रीडेवलपमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। पहली चीज, ऐसा नहीं बोला कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा तो ये प्रोविजन है, ऐसा नहीं बोला रीडेवलपमेंट के लिए होगा तो स्पेसिफिकली ये प्रोविजन। तो रीडेवलपमेंट कोई अलग से ट्रीट नहीं किया, मतलब आपको नॉर्मल प्रोविजंस में से ही एक्सपेक्ट करके निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपका सिनेरियो क्या है। पहली चीज। नाउ so far as the exemptions are concerned, exemption is considered. You have to refer notification 4/2019 central tax rate. ठीक है? वो क्या बोलता है? Services by way of transfer of development right. Services by way of transfer of development right. एक तो ये भी समझना बहुत, बातें बहुत सारी, मतलब एक इतना फुल ऑफ कंटेंट है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन आगे मेरे को चैलेंज है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। डेवलपमेंट राइट्स और टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड टीडीआर बोथ आर डिफरेंट, सो वी कैन नॉट यूज इट एज ए टीडीआर, बट मिस्टेकनली आई वुड से, क्योंकि यार गवर्नमेंट को ध्यान ड्राफ्ट मेकर्स को बहुत कॉन्शियसली इन वर्ड्स को यूज करना चाहिए, बट आप देखेंगे उस नोटिफिकेशन को तो लिखा है ट्रांसफर of development rights within bracket TDR, which as per my understanding, transferable development rights and transfer of development rights both are different. तो एक आप उस exemption को पढ़िए जिसमें बोलता है वो कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के रिलेशन में डेवलपमेंट राइट्स को जो ट्रांसफर किया गया है वो exempted होगा if that booking happens before the date of the completion certificate, मतलब वो थ्रेशोल्ड जो आपका कट ऑफ डेट है उससे पहले जो बुकिंग हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया पर आपको ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स पे टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन जो अनबुक्ड एरिया होगा उस पे आपको एग्जम्पशन नहीं है। फर्दर यू हैव टू रेफर 5/2019 सेंट्रल टैक्स रेट व्हिच गिव्स the list of two services which are subject to reverse charge mechanism. One of these is transfer of development rights or FSC. तो आपके केस में रीडेवलपमेंट के केस, राइट? तो जो आपको FSI मिल रहा है बिल्डर, दैट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, बट रिवर्स चार्ज में तो तब आएगा जब वो टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल तो तब होगा जब वो 4/2019 सेंट्रल टैक्स रेट में कवर्ड नहीं हो, तो आपको वो पढ़ना है। साथ के साथ में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आपको 6/2019 सेंट्रल टैक्स रेट, बहुत सारे रूल होना पड़ा, एंड आप जाइएगा I give you reference, you go to my website lawbrothers.in, वहाँ एक पूरा डिटेल आर्टिकल मैंने डेवलपमेंट राइट्स से लिखा है। ओके, आप वहाँ रीड करिए, जब भी नेक्स्ट टाइम पे अपॉर्चुनिटी होगा तो मैं कोई यूट्यूब पे लिंक करके और आपको भेजता हूँ, ठीक है? तो I give it to the institute and it will be shared. I have the time constraint and I am really sorry for this. Please. Short question, okay sir, please. So sale of plotted lands पे RERA is applicable. I didn't get that. Okay. But the Development है, development of the plot है, और अगर वो propose to be sell है तो of course section 3 of RERA होती है, उस पर registration। डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे बेचते हैं, खाली प्लॉट कट करके वो बेचते हैं। Because I buy 5 acres, I sell it. Applicable. If you are selling it, वो अपने आप ही प्रोजेक्ट होता है, and if you intend to sell it, definitely it has to be registered. Yes. So one more question. If a purchaser is ready to pay 100% money upfront against a registered RERA sale agreement, is the developer allowed to take the full money? The purchaser has some problems like. I am not getting your point. Sir,
as per the RERA agreement, the payment is to be in installments, but the purchaser wants to pay 100% upfront because of his capital gains and all. So is that permissible? Where is the restriction? Because the agreement says it's in installments, but he's So saying no fair. But point A, utilization you have more withdrawn or utilization more proper amount. Agreement to say immediate. Otherwise, he will violate the section 31 of that. So that Yes. promoter has to keep it. Promoter cannot demand, but वो buyer can. ये तो मतलब सर ये क्या है ना मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग दिस इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द लॉ ये तो दोनों पार्टीज के बीच की बात है which has to No, but the question will come when the promoter will not execute the agreement to sell. So then there will be violation. this is next point So that So capital gain we have given. What can the capital gain maybe? आपको रेरा ये बोलता है कि एग्रीमेंट यू नो बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट फॉर सेल आप 10% ऑफ द कॉस्ट से ज्यादा नहीं सकते राइट बस इतना आपको ध्यान रखना है एग्रीमेंट करने के बाद आप भी So one more question. Builder has a name. आप दूसरा काम करेंगे. Whenever the transaction उसमें separate एक subsidiary का separate action का paper चला के you'll save us. Thanks. what you are saying sir Whenever you are giving such kind of money, the developer should take some kind of consent. The voluntary I am offering this thing. I have not demanded something. But 20%. So one more question. Builders have to follow a percentage of completion method for income tax, whereas GST is on cash receipt basis. Any solution to avoid this mismatch between GST and income tax? I cannot answer at this point of time this is like interest 115 and all सब कुछ पूरा मिक्स करके yes please बिग क्वेश्चन सर मतलब ये सब चीजें जो है बड़े मैटर्स है मतलब एक लाइन में इसको मैं कंप्लीट नहीं कर सकता यस सीसी मींस ये भी क्या है क्योंकि कोई सीसी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बोलता है कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट ओके basis turnover ratio and after 2020 basis targeting. हाँ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऐसा आपका आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये लेकिन होगा क्या 17-18 के लिए आपने टर्नओवर बेसिस पे किया 18-19 में भी आपने मंथली बेसिस पे टर्नओवर पे किया राइट अब रूल 42 ये बोलता है कि आपको फाइनल कैलकुलेशन करना है ईयरली बेसिस पे ठीक है और तब तक 1 अप्रैल 2019 से नया नोटिफिकेशन आपके पास में गया 16/2019 सेंट्रल एक्सटेट एंड इफ यू रीड रूल 42 तो ये बोलता है कि जिस in case of ongoing project if you receive the completion certificate on or after 1st of April 2019 you have to compute the reversal of input tax credit on the basis of carpeting तो क्वेश्चन ये है कि जितना भी आपने अभी तक रिवर्सल किया है उसका टोटल निकालो और कमेंसमेंट डेट से लेकर कंप्लीशन डेट तक कार्पेट एरिया के बेसिस पे रिवर्सल निकालो जितना कवर हो गया है उतना कवर है और बाकी का आपको रिवर्सल कार्पेट so thereby you will be able to comply with both of the things okay Sir, with 80-20 का rule, purchase from the registered and unregistered, yes is it applicable for the affordable housing also in the affordable sector? सर वेरी गुड क्वेश्चन 80-20 देखिए अफोर्डेबल एक बहुत ही यू नो बड़ा टर्मिनोलॉजी है चीज छोटी है लेकिन यू नो बड़ा इफेक्ट है इसका एक अफोर्डेबल वो है जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड एग्जिस्टिंग व्हेन आई एम सेइंग एग्जिस्टिंग मींस 31st of March 2019 तक के पर एक अफोर्डेबल वो है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे न्यू डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता आप देखिएगा ऑन और बिफोर 31st March of 2019 you had a different definition low cost house up to 60 square meter this was the definition which has been given the infrastructure एक तो अफोर्डेबल एक अफोर्डेबल वो है जो न्यूली डिफाइंड है और वहां कॉस्ट भी मेजरमेंट दिया है जब आप 3 अप्रैल 2019 सेंट्रल एक्सटेट में पढ़ेंगे तो दो कंडीशंस फुलफिल करने पर किसी अपार्टमेंट को अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बोलता है पहला कंडीशन थी वो
60 square meter or 90 square meter का criteria for MMR 60 square meter and the cost is 45 lakh. उन्होंने 45 को MMR के लिए अलग नहीं किया. ओके, तो पॉइंट ये है कि जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन पे जो जीएसटी का लेवी है वो विद टैक्स है. इन अ केस वेयर यू हैव सबमिटेड एनेक्सर 4, आप 1st of April 2019 ऑनवर्ड्स अगर आपने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट 30th जून आपने अगर उसका एनेक्सर 4 सबमिट कर दिया, इन दैट केस इट इज tax with ITC, and when there is a tax with ITC there is no question of application of 80/20. In the new project, सिर्फ विदाउट आईटीसी वाले प्रोजेक्ट पर, न्यू प्रोजेक्ट ही नहीं बोल रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने बहुत पर्पसली उसको एक्सक्लूजन वाले मेथोडोलॉजी से बताया, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी विदाउट आईटीसी में शिफ्ट हुए हैं और मेजॉरिटी में विदाउट आईटीसी में शिफ्ट. और जहां प्रमोटर्स ने ऑप्ट किया कि नहीं मुझे तो विद आईटीसी रीजन में ही इसको चलाना है, तो ऐसे केस में 80/20 नहीं, बाकी हर किसी केस में 80/20 है. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट विद आईटीसी इन द न्यू रीजन नो 80/20 एक्सेप्ट टू दैट एवरीथिंग इज. उसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर वो कमर्शियल अपार्टमेंट 18% पर चल रहा है तो उसमें भी 80/20 नहीं, वहां विद आईटीसी है वहां 80/20 नहीं. इन शॉर्ट, यस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज. सर प्लीज. सेकंड, हाँ, सर could you please repeat it, please? ठीक है. तो क्या जीएसटी भरना पड़ेगा सेकंड माइलस्टोन ड्यू हो गया है इसमें? Obviously. बट मैंने रजिस्टर नहीं किया तो आई एम नॉट. माइलस्टोन कहाँ से है? माइलस्टोन कहाँ से है? नहीं, उससे नहीं होगा, आपकी कॉस्ट शीट से नहीं होगा. फाइनली समहाउ यू हैव, मतलब देखो वापस समझिएगा, जीएसटी इज लेवीड ऑन द सप्लाई, पहली चीज, ठीक है. आप सेक्शन, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, if you read section 7 subsection 1 of Central GST Act, it says supply includes all forms of a supply which are made or agreed to be made, and that is why advance is subject to GST. आप समझ रहे हैं, agreed to be made को भी सप्लाई के स्कोप में कंसीडर किया है. अगर अदरवाइज तो सप्लाई मेड ही नहीं होती तो उस पर वो टैक्स कहां से लेते? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस अग्रीड टू बी मेड की वजह से उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई में विचेबल एलिमेंट का फार्मूला देखा है, मतलब वो ऑपरेशनलाइज तब हो रहा है जब वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 से सपोर्टेड है. ऑलराइट, नाउ इन व्हाटएवर मैनर इफ बोथ ऑफ द पार्टीज हैव अग्रीड टू पे एंड रिसीव इन दैट मैनर, द टैक्स इज लेविड अपॉन. हां, ऑफ कोर्स उसके लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या होगा? मेरे हिसाब से वो एग्रीमेंट सेल एग्रीमेंट ही होगा, जहां आपके माइलस्टोन्स लिखे होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और वर्बल टॉकिंग और not having a proper documentation will not determine the taxability, right? So मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, I revise this. अगर सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आप माइलस्टोन कहां से ट्रिगर करें, और माइलस्टोन अदरवाइज ट्रिगर नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, फिर टैक्स का है. अलॉटमेंट देना होगा. अलॉटमेंट लेटर में माइलस्टोन है क्या? नहीं होता. अलॉटमेंट लेटर तो आपको सिर्फ मार्केशन मार्क करता है कि दिस पर्टिकुलर यूनिट इज बीइंग गिवन टू यू, दैट्स ऑल. अलॉटमेंट लेटर डज नॉट कंटेन दैट काइंड ऑफ. Sir, can you share the presentation to us on email? It is for you only, sir. So I have to share it. The email addresses are there on this now. If you would share it. Thank you, sir. So here I conclude. I enjoyed a lot with you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Vivek sir. Thank you for this enlightening session on the most complicated sector
of GST, and thank you for your guidance and your resolve, paving the way out and guiding the audience for all the complicated issues. Thank you for making us more aware and ways to resolve such issues. I would also like to thank WIRC Chairman Sir, Mr. Dinesh Doshi, who was our guest of honor for today, CA Ketan Saya, who is the Treasurer WIRC, CA Manish Gadia Sir, CA Vivek, and thank you to you all for being such a wonderful audience and such an interactive audience. Thank you so much, and looking forward for further participations. Thank you. Including Thank you, sir.